Hello, my dear student of standard 7th, and today we are going to discuss chapter number 8, that is Delhi during the medieval period. So, basically, in this part, we are going to see some of the dynasty, and this is part 1. So, I am going to cover this chapter into two parts. This is the first part where I am going to cover the slave dynasty, and then I will going to cover the Khilji dynasty. Tughlaq dynasty, Vijayanagar kingdom will be the part of the will be going to be present in the second part. But today, so let's begin and let's see. See, initial three lines are saying that Bhagwati Ben, she is a very good student of a history and she like to know the history of India. So whenever she visited any place, she took one book with her and she noted all the facts which is provided by the statue, and there are some inscription written over there, and all such kind of information about given by the guide also. So by her she is presenting these things. So our first topic is the slave dynasty. Let me zoom it for you for your reading purpose. Yes, slave, you can say Ghulam dynasty. See, we are going to say Delhi Sultanate, or we can say Delhi Sultanate. So Delhi Sultanate is a some kind of proper word, and it's the beginning of the century after the death of the Muhammad Ghori. His loyal slave, that is Qutbuddin Aibak, come into the power, and he established the slave dynasty. Though he is facing many difficulty, but somehow he used to manage all the such thing. Well, you can see there is one picture. It is a picture of the Qutub Minar, and it is built by the Qutbuddin Aibak. So it's a five-storied building, and when the first storied work get finished, he passed away, and after him his son-in-law Itutmis, okay, he started ruling and he completed that minar, okay, and that is called the Qutub Minar. Let me zoom it for you. Yes, okay. So 8.1 Qutub Minar, and the building Qutub Minar is approximately 72-meter height, and last year I got the chance to visit that place also. uh, the building Qutub Minar is built by the both Hindu as well as Muslim style of architecture, okay. So let us move to the next slide. Okay. Hmm. So, Iltutmish is one of the loyal slave in the beginning, and he conquered all the nearby area at the Delhi, and he founded. After Iltutmish, his daughter Razia Sultan. You can see in the picture here. Okay, she's a female, and it's a very rare incident that we found the female rulers in the history, and she is one of them. See, Iltutmish has son also, but the son is not उसका मतलब चाल चलन ही ऐसा था कि उसको समझ में आ गया कि ये अगर किंग बनेगा तो गया किंगडम पानी में. सो बट हिज डॉटर इज टू एफिशिएंट. ओके, रजिया सुल्तान. आई यूज टू रिमेंबर हेमा मालिनी की एक मूवी है जिसमें वो रजिया सुल्तान बनी हुई है. रजिया सुल्तान अगर आप गूगल करके सर्च करोगे देन यू विल फाइंड दैट मूवी ऑल्सो. नाउ रजिया सुल्तान इज अ वेरी एफिशिएंट रूलर, एंड ही कम इन आफ्टर हिज डेथ of his father Iltutmish. She took over the whole kingdom in the year 1236. Okay, 1236 it is written over here. She is a very efficient ruler, and some of the historian uh, honor him by saying her Minase Siraj. Okay, she took the get-up of the male, and going to the assembly and all that, and those many people at a time, they were not they are not like the Rajia Sultan, and because of maybe she is female, that is why. There is one question written in the bottom part think box. Let me read that. Position of men and female is men and woman is equal in society. Then why was Rajia Sultan not accepted as a ruler? See, आज के टाइम पे मैन एंड वुमन को हम लोग इक्वल स्टेटस देते हैं. ऐसा कुछ नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर सिर्फ मेल ही बन सकता है.
फीमेल ही बन सकती है ना. वी हैड द फीमेल प्राइम मिनिस्टर लाइक इंदिरा गांधी. ओके, वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट प्राइम मिनिस्टर. एंड प्रेसिडेंट के पोस्ट पे भी प्रतिभा पाटिल इज ओके. सीएम भी अगर हम लोग चेक करें तो ममता बनर्जी राइट नाउ इज द सीएम ऑफ द वेस्ट बंगाल, है ना. सो it was happened in the past, but now the status are quite similar and equal. So Amir Umrao, they dislike the Razia as a ruler. Now I think his brother is maybe his brother, not given here clearly. So after here nothing is mentioned how Razia Sultan was killed, but due to the interference of the Amir, she lost her life. See, as per my research, उसको खाने में शायद जहर दिया गया था, that is why she died. And after Amir will become the next Sultan. That is a complete disorder. As I said कि उसके भाइयों में मतलब कुछ इतना मतलब था नहीं कि वो किंग बन सके. After him, the Nasruddin come into throne and he ruled for 21 years. And one of his minister, Ghiyasuddin Balban, ruled, and again Nasruddin, his wazir, ruled for 20 years. So after that, Iltutmish and Razia Sultan, the kingdom of the slave dynasty worked properly, and somehow they were. But after the slave dynasty, Khilji dynasty established their rule in Delhi. But we are going to discuss it later. Let us read what is given in the box, that is things to know. See, one of the archaeologists has found some coins, and in that coin Razia Sultan images is mentioned, and she dressed up like a male. Okay, such kind of incidents are also found in the Kakatiya dynasty. Okay, it is somewhere over the Warangal here. Nowadays it is in Andhra Pradesh. And that place you will find Queen Rudra Ma Devi. Okay, she ruled at that area around 1259 to 1289 for you can say 30 years. It's a big period of time. And Razia Sultan ruling at the North India, and she ruling at the southern part of the India. Okay, and similar kind of incident we can see in Kashmir also. Kashmir Queen Didda. Okay, so Didda is ruling that party, and the subject, the people also like her. वो उनको प्यार से दीदी बुलाते थे. ओके, लेट मी टेल यू, वेस्ट बंगाल की जो सीएम है ममता बनर्जी, उनको भी लोग दीदी बुलाते हैं. ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज द खिलजी डायनेस्टी. वेल, after the death of the Balban, there is a complete disorder in the Ghulam dynasty, slave dynasty. Meanwhile, इसी सिचुएशन का बेनिफिट उठा के खिलजी डायनेस्टी इस्टेब्लिश होती है. वेल, दे आर द तुर्क कम्युनिटी हु आर बिलोंगिंग टू द अफगानिस्तान, एंड इनको हम लोग खिलजी कहते हैं. एंड ये किसने फॉर्म किया? जलालुद्दीन खिलजी. ओके, उसने स्लेव डायनेस्टी को एंड कर दिया, एंड देन ही इस्टेब्लिश द खिलजी डायनेस्टी in the year 1296. Okay, and Alauddin Khilji's nephew's son-in-law, that is Jalaluddin Khilji, who took the control, and he is very ambitious. Okay, and the first thing he done, that he stopped the interference of the ulemas and umraus in the administration. And Alauddin Khilji, sorry I was mistaken in the above part, Jalaluddin Khilji established, and his son-in-law Alauddin Khilji took control. And Alauddin Khilji, what he do? He's thinking for the people. So what he does, he put strict laws and control the price of the basic commodity in order to smoothen the people's life. There were some famous poet in his time like Amir Khusro. He praises the work of the Alauddin Khilji. And after that, Alauddin Khilji dynasty took over by the Tughlaq dynasty. Okay, Tughlaq dynasty will be going to be the part of our next session. Well, we can see some of the images of Alauddin Khilji and his poet Amir Khusro. Now
Before ending this session, there is a last question is there in this slide in the box of think. If the price of essential commodity are not controlled, how will it affect our lives? Do you think it is necessary to control the prices of the basic commodity? सी फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन पूछा गया है कि जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं जैसे कि फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, फूड ग्रेन्स हो गया एंड हमारा जैसे मिल्क हो गया, ये सारी चीज़ें ना बेसिक कमोडिटीज़ में आती हैं। एंड अगर इनका प्राइस बहुत बढ़ेगा तो क्या होगा, हम इनको परचेस करने के लिए हमको ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे और यूजुअली ज़्यादा पैसा पे करना पड़ता है तो चलो कुछ लोग तो अफोर्ड कर सकते हैं बट पुअर पीपल वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ओके, तो जब भी बेसिक कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो लोगों की लाइफ थोड़ी मुश्किल हो जाती है एंड लोग फिर गवर्नमेंट को पसंद नहीं करते हैं। ओके, उनको सपोर्ट नहीं मिलता है। सो गवर्नमेंट नीड्स टू कंट्रोल द प्राइस द बेसिक कमोडिटी। आई थिंक 2014 में जब इंडिया में गवर्नमेंट चेंज हुई थी कांग्रेस से बीजेपी, द इन्फ्लेशन जो महंगाई होती है वही मेन रीज़न था, क्योंकि जो बेसिक प्राइस कमोडिटीज़ के जो प्राइस थे ना वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे थे। ओके, सो फटाफट हम लोग एक बार ये आज जो किया है उसका रिविजन कर लें। सी भगवती बहन इज अ गुड स्टूडेंट ऑफ द हिस्ट्री एंड वो अपनी डायरी में जो भी जहाँ पे भी जाती है नोट डाउन करती है। सो अकॉर्डिंग टू हर स्लेव डायनेस्टी, गुलाम डायनेस्टी इस्टेब्लिश हुई 1206। ओके, इट इज इस्टेब्लिश बाय द कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने कुतुब मीनार बनवाया था। यू कैन सी ऑन द पिक्चर 8.1 एंड उन्होंने मीनार बनवाया था एंड बीच में उनकी डेथ हो जाती है एंड उनके ही सन इन लॉ इल्तुतमिश उसको कंटिन्यू करते हैं और फिनिश करते हैं। आफ्टर डेट इल्तुतमिश वो थोड़ा किंगडम को अच्छे से हैंडल करते हैं एंड देन उनकी डॉटर, क्योंकि उनके भाई इतने एफिशिएंट नहीं होते हैं तो डॉटर रजिया सुल्तान, जिनको हम लोग सुल्ताना भी कहेंगे, वो रूल कर रही थी। ओके, शी इज एन एफिशिएंट रूलर, शी ड्रेस लाइक अ मेल इन द कोर्ट एंड historian has given them remarks like Minase Siraj, Razia is more capable than her brothers. Okay, एंड बट तो भी कुछ लोग जो कुछ मेल्स की मेंटेलिटी होती है ना कि वो फीमेल्स को पसंद नहीं करते हैं। सो शी इज फेसिंग एंड हिज ब्रदर, हर ब्रदर अमीर हैज़ किल्ड हिम बाय ट्रिक्स। ओके, खाने में शायद जहर मिला दिया था बट इट इज़ नॉट मेंशन ओवर हियर। सो रजिया, आफ्टर रजिया अमीर इज रूल फॉर 6 years but complete disorder. After that Nasruddin took control and after Nasruddin, Ghiyasuddin Balban and again his son took control. After the slave dynasty, Khilji dynasty took control and खिलजी डायनेस्टी में जलालुद्दीन बलबन ने इस्टेब्लिश किया एंड देन ही सन इन लॉ अलाउद्दीन खिलजी ने उसको कंट्रोल में ले लिया। उसने प्राइस कंट्रोल करके रखा था। ओके, उसने उलेमास एंड उमराउस के जो इंटरफेरेंस होता है स्टेट में उसको भी कंट्रोल करके रखा था। वेल, वी आर गोइंग टू डिस्कस द तुगलक डायनेस्टी इन आवर नेक्स्ट सेशन। आई होप आपको ये सेशन थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे एंड बाय एवरीवन।